The Federal and Francis Xavier Engineering College jointly present the Nellai Marathon 2024. This event is powered by Little Flower Public School and NIMS Hospital, Tirunelveli. Run for Health on Sunday, December 29. Entry is free and all are welcome. Priyanka Gandhi Vadra made her debut in Parliament, delivering a speech that was as much a tribute to the Constitution as it was a sharp critique of the BJP led government's policies and actions. Speaking during a special debut to mark the 75th anniversary of the Constitution, she highlighted the pivotal role of the Constitution as a protective shield and accused the government of systematically trying to weaken it through measures like privatization and lateral entry, which she argued undermine the reservation system. इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है, कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। Priyanka tied the push for a caste-based census to public demand, asserting that the BJP only entertained the idea due to electoral pressures. She also criticized the ruling party for using federal agencies to suppress dissent and called for a return to voting via ballot papers. Referring to historical episodes like the emergency imposed by Congress itself, she encouraged the BJP to learn from past mistakes instead of weaponizing them against current position. राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। Her speech also referenced key incidents such as the Unnao rape case and communal violence in Sambal, framing them as symptomatic of a government failing to uphold justice and equality. Priyanka alleged that the government serves the interests of big businesses while sidelining common citizens, emphasizing that the BJP's rhetoric on the constitution rings hollow in the face of their actions. कृषि के कानून भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। By invoking Baba Saheb Ambedkar and aligning her stance with the people's demands, Priyanka positioned herself as a strong advocate for constitutional values and social justice in her maiden speech. Her remarks set the tone for her tenure as a first-time MP from Wayanad. Commenting on first-time MP and her sister Priyanka Gandhi's maiden speech in Parliament, here's what Rahul Gandhi said. I saw it. It was a very good speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that.
The Federal and Francis Xavier Engineering College jointly present the Nellai Marathon 2024. This event is powered by Little Flower Public School and NIMS Hospital, Tirunelveli. Run for Health on Sunday, December 29. Entry is free